Hello everyone, my name is Kirti and I am an assistant professor in ITM. Today I am going to cover the following topic in the subject banking and insurance. The topic is introduction of commercial banking, functions of commercial banking. It has been divided into three parts, that is primary functions, secondary functions and other functions. Commercial bank. A commercial bank is a profit seeking business firm dealing in money and credit. It is a financial institution dealing in money in the sense that it accepts deposits of money from the public to keep them in its custody for safety. So we already discussed in the previous lecture that the main function of the commercial bank just to accept the deposit from the one part, make deposit over it and lending to the other part, right? So the commercial bank, it is an important organ of the money, serve the various sector of the economy through their borrowing and lending operations. Move to functions of commercial banks. Number one is primary functions. Primary function means the main functions of the commercial banks. Number one is acceptance of deposits. Now this is an important primary functions of the commercial bank, and this we can say the oldest functions of the commercial bank, and previously the banker used to charge the commission over it just to keep the money in its safe custody, right? The commercial bank accept deposit from the individual, business firms, other institution beside its shareholder. So the commercial bank accept deposit in several forms according to the requirements of different section of the society. Number one is saving deposits. So these deposits are mostly made by individual household. Money deposited in this account retain a high degree of liquidity besides earning interest at some nominal rate. So the saving deposits, आप जो डिपॉजिट्स करवाते हो बैंक में या आपके जो भी मदर फादर है वो डिपॉजिट कराते हैं, दैट इज कॉल्ड सेविंग डिपॉजिट. आप पहले अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हो, उसमें डिपॉजिट करवाते हो. सो द मोस्टली मेड बाय द इंडिविजुअल हाउसहोल्ड एंड हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी मीन्स दे कैन बी रीपेबल ऑन डिमांड. आपका पैसा जब भी आप चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, राइट? एंड बैंक इज प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ओवर इट ऑब्वियसली, क्योंकि बैंक इट्स आपने डिपॉजिट करवाया तो इट मीन्स बैंक आपसे मनी बोरो कर रहा है तो ऑब्वियसली आपको इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा. मूव टू fixed deposit. In the fixed deposits account, money is kept for a specified period. These deposits are also called term deposits or time deposits. Term deposit or time deposit, since the amount deposited with the bank cannot be withdrawn from the expiry of the period for which it was contracted, right? तो जिसमें आप फिक्स डिपॉजिट मतलब सर्टेन टाइम पीरियड के लिए आपने अपना पैसा ब्लॉक कर दिया है बैंक के पास, तो बैंक उस पैसे को उस टर्म के लिए यूज़ कर सकती है. तब तक आप अपना पैसा विड्रॉ नहीं करते, बट इन एन एमरजेंसी कंडीशंस यू कैन विड्रॉ द मनी. ठीक है, अर्लियर विड्रॉ इन एमरजेंसी विल मीन अ रिडक्शन इन द इंटरेस्ट रेट. ठीक है, तो ऑब्वियसली तब आपको जनरली बैंक क्या करती है, जो भी आपका सेविंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो आपको प्रोवाइड करती है. या जब आपने विड्रॉ किया पैसा उस टर्म को लेकर, अब क्योंकि काफ़ी चेंजेस हुए बैंकिंग में, तो उस टर्म तक के लेकर जितना भी आपका इंटरेस्ट बना है उस टर्म का आपको इंटरेस्ट देगी और कुछ पेनल्टी डिडक्ट करेगी आपके अकाउंट से, राइट? Next, move to recurring deposit. Recurring deposit is a special kind of term deposit offered by banks which help people with regular incomes to deposit a fixed amount every month into their recurring deposit account and earn interest at the rate applicable to fixed deposit. तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स डिपॉजिट होगा वो रिकरिंग डिपॉजिट में भी होगा, जिसको आप आरडी कहते हैं. इसमें डिफरेंस ये होता है कि इंस्टॉलमेंट बेसिस में आपकी मंथली क्वार्टरली जो भी पोजीशन होती है, जनरली मंथली बैंक एक सर्टेन अमाउंट डिडक्ट करता है जितने की आप आरडी ओपन करते हैं, और उस पर जितना जितना आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा. लाइक फॉर एग्जांपल आपने 12,000 की आरडी ओपन की, तो आपने कहा कि आप 1,000 की इंस्टॉलमेंट हर मंथ पे करेंगे. तो पहले मंथ में आपको 1,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा और सेकेंड मंथ पे 2,000 पे, थर्ड मंथ में 3,000 में, सो ऑन. तो these are the recurring deposits. Then move to demand deposit. Deposits in the current account are known as demand deposits since these deposits are repayable on demand. तो जो आप डिपॉजिट्स, जैसे आप अपने सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट कराते हैं, इसको सेविंग डिपॉजिट्स, राइट? सेविंग अकाउंट. डिमांड डिपॉजिट मतलब जो आप करंट अकाउंट में आप अपने डिपॉजिट्स कराते हैं, दैट इज कॉल्ड deposits, that is called demand deposits. The depositor can deposit or withdraw money as and when they like
without any restriction on the number and amount of withdrawals, right? The second functions is advancing of loans. Extending loans is another important primary functions of the commercial bank, which is future money is exchanged for present money. Banks adopt several ways for giving loans, right? तो second जो main business है वो obviously providing loan to the public, right? And they are charging interest over it. So bank adopts several ways. Number one is ordinary loans. The commercial banks advance loans against some tangible securities. The amount of money is, however, not given to the borrowers in cash, rather it is credited to their accounts. तो ordinary loans जो आप लेते हैं, आप provide करते हैं, तो इसमें क्या होता है आपको commercial bank advance loans against some easily marketable tangible securities. तो tangible जो भी securities होंगी आपका, for example आपने loan लिया against your house, right? टेंजिबल सिक्योरिटी होगी उसके अगेंस्ट हाउस, जैसे आपने हाउस के अगेंस्ट लोन लिया, ठीक है, या अदर कोई टेंजिबल सिक्योरिटी है जो एक मेजर या आपने गोल्ड के बदले आपने लोन लिया, राइट? सो द अमाउंट ऑफ मनी इज हाउएवर नॉट गिवन टू द बोरोअर इन कैश. उनको कैश में नहीं जाता है, अदरवाइज वो क्या करते हैं उनके अकाउंट में जो है क्रेडिट कर देंगे जो भी अमाउंट होगा. देन मूव टू ओवरड्राफ्ट. ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इज गिवन टू दोज कस्टमर who maintain a current account with the bank generally, right? Overdraft, it is a financial instrument in which the money can still be withdrawn from the current or saving accounts even if the account balance goes below zero. The customer can withdraw money till the assigned limit. Banks to charge interest rate on the money withdrawn in the form of overdraft. जब आपको एक छोटे तौर पर एक लोन चाहिए होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ए लोन. ओवरड्राफ्ट मतलब एक लिमिट असाइन कर दी जाती है कि आपका बैलेंस जीरो भी हो जाए तब भी आप अपने क्रेडिट टर्म्स अगर आपके बैंक से अच्छे हैं तो आप ओवर एंड अबव से लिमिट पैसा विड्रॉ कर सकते हो. जनरली अगर मैं सेविंग के फॉर्म में कहूँ तो आप जैसे आपने एफडी करा रखी है तो उसके बेसिस पर आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं और जो भी इंटरेस्ट चार्ज करेगी बैंक वो आपको देना पड़ेगा, राइट? देन मूव टू डिस्काउंटिंग ऑफ बिल. इन मॉडर्न बिजनेस अ फ्यू पीपल कैन वेट फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज until these mature banks discount the bills after charging the interest for the period and the cost of collection, right? So the bill discounting is an arrangement whereby the seller recover an amount of sales bill from the financial intermediaries before it is due. Such intermediaries charge a fee for the service. When the bill of exchange matures and the bank gets its payment from the debtor who accepted the bill. Now move to secondary functions. Secondary functions में number one है आपका क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशन में क्रेडिट क्रिएशन इज अ सिचुएशन इन विच द बैंक्स मेक मोर लोन्स टू द कस्टमर्स एंड बिजनेसेस विद द रिजल्ट दैट द अमाउंट ऑफ मनी इज सर्कुलेटिंग बीइंग पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर इंक्रीजेस. सेकेंडरी फंक्शंस मतलब जो डायरेक्ट पब्लिक से डीलिंग नहीं हो रही है, बट बैंक का सेकेंडरी मतलब मेन फंक्शन के बाद जो सेकेंडरी फंक्शन है कि बैंक पब्लिक से डीलिंग कर रहे हैं उनसे रिलेटेड फंक्शंस तो कर रही है, उसके अलावा कौन कौन से फंक्शंस कर रही है. तो नंबर वन इज क्रेडिट क्रिएशन. क्रेडिट क्रिएशंस क्या होता है, जो क्रेडिट में बताया कि जब बैंक क्या होता है प्रोवाइडिंग मोर लोन टू द कंज्यूमर एंड बिजनेसेस, ठीक है. तो क्या होता है कि क्रेडिट क्रिएशन में ऑब्वियसली जो बैंक है उसको क्रेडिट क्रिएट करना है कि बैंक ने एक जगह से डिपॉजिट लिए और दूसरी जगह को वो डिपॉजिट एज ए लोन दिए, खूब सारे लोन दिए कंज्यूमर्स को, बिजनेसमैन को, तो मनी क्या होगी सर्कुलेट होगी जिससे क्रेडिट क्रिएट होगा, राइट? सो क्रेडिट क्रिएशन इट्स लाइक अ यूनिक फंक्शंस ऑफ द कॉमर्शियल bank. No other financial intermediary has the power to create credit. Next move to transfer of funds, right? The bank provide check facility with the help of which customers can withdraw any amount from their deposit to suit their convenience. Further, this facility enable them to transfer funds from one place to another. Other credit instruments like demand draft, pay order can be used for this purpose, right? Then move to other functions. Other functions, obviously the modern commercial bank has considerably extended their services and the fields of operation to attract more businesses. So number one function is agency functions. Commercial bank act as a financial agents of their customers. They collect and make all sorts of payment for their clients by accepting checks, drafts, bills, promissory note, etc. Bank make payment to the insurance
premium, even personal taxes while receiving payments of insurance claims, pension claims, dividend claims on the behalf of their customers. तो एजेंसी फंक्शन में इट्स वर्क लाइक एन एजेंट, मीडिएटर की तरह काम करता है कि एक जगह से पेमेंट ली, एक जगह को दी, राइट. तो चेक को एक्सेप्ट करना, ड्राफ्ट, बिल, प्रोमिसरी नोट्स, इंश्योरेंस प्रीमियम देना, ठीक है, और जो पर्सनल टैक्सेस है वो पे करना. सो these type of functions done by the banks. Now move to sale and purchase of foreign exchange. Sale and purchase of foreign exchange has increased with the expansion of international trade. Some commercial banks are authorized by the central bank to deal in foreign trade. They issue letter of credit, extend pre-shipment and post-shipment credit, discount bill of exchange, and provide guarantees to foreign traders for the soundness of their customers. Therefore, the business firm are able to extend their field of operation in far off markets, right? Then move to general utility services. Now, besides the above specific function, modern commercial banks render some other general utility services, right? Like a credit card is a card that allow their holders to make purchase of goods and services instead of immediate payment for the goods and services, and the card holder promising to pay back the amount of the purchase to the card provider over a time and with the interest. ATM services, number one is ATM services. So ATM replace human bank tellers in performing giving functions such as depositing, withdrawing, अकाउंट क्वेरीज. की एडवांटेजेस ऑफ ATM, आपको पता है बच्चों, ATM सर्विसेज जो आप लेते हैं. देन डेबिट कार्ड इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म थ्रू विच द डायरेक्टली फ्रॉम द फंड विड्रॉ डायरेक्टली फ्रॉम द कार्ड होल्डर अकाउंट. यू नीड जस्ट अ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर जस्ट टू वेरीफाई द ट्रांजेक्शन. देन मूव टू ऑनलाइन बैंकिंग. ऑनलाइन बैंकिंग आपको पता है इंटरनेट बैंकिंग थ्रू विच यू नो नीड टू विजिट द बैंक, ठीक है. दैट अलाउ अकाउंट होल्डर टू असेस देयर अकाउंट वाया द इंटरनेट, right. Then move to mobile banking. Mobile banking is used for balance checking, account transaction, payment, application. These are the modern banking system. These functions include the modern banking system. Then banking transaction through PDA. Then move to priority banking. Priority banking can include a number of various services, but the main popular services is online bill payment, consultations, right. Then move to private banking. So personalized financial and banking services that are traditionally offered to the banking digital and high net worth individuals, ठीक है. उनको प्राइवेट बैंकिंग, स्पेशल बैंकिंग प्रोवाइड कर दी जाती है. दैट्स कॉल्ड प्राइवेट बैंकिंग, जहाँ पे पर्सनलाइज्ड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है हाई नेट इंडिविजुअल्स को वेल्थ मैनेज फॉर द वेल्थ मैनेज पर्पसेस, राइट. देन मूव टू कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट. So different type of credit instruments such as bill of exchange, promissory notes, checks are used. Banks deal with the instrument. Modern banks collect and pay different type of credit instrument as the representative of the customer. Then move to bank guarantee. Now customers are provided the facility of the bank guarantee in the modern commercial banks. When customers have to deposit certain fund in the government offices or courts for a specific purpose, a bank can present itself as a guarantee for the customer instead of depositing fund by the कस्टमर्स. तो बैंक गारंटी क्या होता है? जब बैंक एज ए गारंटर पेश होता है, ठीक है. बैंक एज ए गारंटर पेश होता है जब भी आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जनरली एक बिजनेस फर्म जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डील करती है तो ऑब्वियसली बैंक इज डूइंग लाइक अ मीडिएटर एंड बैंक गिविंग द गारंटी टू द गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑन बिहाफ ऑफ द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, राइट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.